Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Nilesh. Good morning, Varun. Keep the chat clean, guys. We'll start in 2 minutes. Good morning, Samad. Everyone, keep the charts clean. जो ट्रेड में है MTSL के साथ, ठीक है? Good morning, Amit Patel. Let's start with gold. अगर ये आज ब्रेक करेगा ना मजेदार मूव आएगा बट आज थर्सडे है करेक्ट ब्रेक चाहिए so starting with daily time frame this is our previous demand allocation लेंगे जितना हमारा प्रीवियस इंड्यूसमेंट रेंज है उतने का ये मूवमेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिट्रेसमेंट आइडेंटिफिकेशंस पे अलोकेट करेंगे उसके साथ जो डिमांड था वो डिमांड को कंटिन्यूटी में विद द रिट्रेसमेंट अलोकेशन कंटिन्यूटी में ब्रेक हुआ था डिमांड रेंज सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 200 150% से रिजेक्शन लेंगे एंड allocate the buying positions, right? Buying positions allocate करने के बाद what are the next major steps that we'll be looking at the current stage of point of actions? Supply. सप्लाई वन यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी है हमें सो वी विल टेक द मार्किंग ऑफ सप्लाई वन रिजेक्शन कितना मिला हमें यहाँ पे जितना हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन था उतना ही रिट्रेसमेंट हमको यहाँ पे दिखी ऑन द कंटिन्यूटी जितना हमने सप्लाई मार्कआउट किया था दैट विल बी मार्क एट द करेंट रेंज ऑफ एक्शंस उसके साथ मार्केट ने ब्रेक किया था सो मल्टीप्लाइड 150% रिजेक्शन 200% टारगेट अलोकेशन देखेंगे right? In this state of actions, do we have 150% rejections? Yes, definitely we have 150% rejections at this point of actions. With this, next हमारा target होगा on the break 200% का, right? So 200% का level up आके कहाँ पे दिख रहा है हमें at the current stage? Is this point of action जो कि हमारा mathematical number का 7-8 का target है. Right, what are the next steps that we'll be looking over here? Let's take the swing high of this, swing low of the 2833 and the retracement point of the 2880.673. Let's do the math and look into the directions of the markets. So what are the first steps that we'll be looking in the scenario at the current stage of actions? Mathematical concept gold का allocation के साथ देखेंगे 2930.193 minus 2833.249. What is the formulative number that we have got? The formulative number that we have got at the current stage of action is of 96,944. What is the retracement point we are having at the current stage? 2880.673. Direction is bullish plus formulative number 96944 into 1.618. What are the targets that we are having at the current stage? 3037.52. जो कि हमारा वो टारगेट हिट हो चुकी है यहाँ पे व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट रिट्रेसमेंट 2880.673 प्लस फॉर्मुलेटिव नंबर 96944 into 2
द नेक्स्ट टारगेट प्लान ऑफ एक्शन जो कि है हमारा यहाँ पे 3074.561 जो कि हमारा इंटरमीडिएट रेशियो होगी, राइट? उसके साथ व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट विल बी लुकिंग ओवर हियर? द नेक्स्ट स्टेप्स वी आर लुकिंग, what we'll be looking over here will be in the 4 hours, right? Coming down to 4 hours, what are the major circumstances that we'll be working to start with? Starting with the POI range and the inducement zone. Selling pressure 1, we will mark this demand at the current point of action. So uske saath multiplied version pe dekhenge. Post the retracement, we have a break and continuity. With that, जो भी movement allocation में यहाँ पे दिखी है, that will be acting as the post retracement break again, right? So इस point of actions mark करने के बाद what are the major things that to be kept in the mind? Where exactly market tend to move from? The market tend to move from the point of action of 150% post allocation range, right? So once the allocation is done, what are the next steps that we'll be looking over here? This was our mathematical number. With the mathematical number, there was a break and continuity. So this will act as our current supply. With the current supply, market ने यहाँ पे कितना rejection लिया? Bearish movement का last retracement point will act as the current retracement in the bullish movement, जो कि demand हमारा है, right? Post that point of action, जितना हमारा मूवमेंट ऑफ एक्शन में था सप्लाई में, दैट विल गेट मल्टीप्लाइड एंड एक्ट इन द करंट स्टेट ऑफ मूवमेंट. मार्केट में रिजेक्शन कितना लिया? जितना हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन था उतना ही रिजेक्शन के साथ मार्केट ने कंटिन्यूटी में रिजेक्शन ली एंड मार्केट टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन. कितना मार्केट ने मूवमेंट लिया? जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई ऑफ एक्शन यहाँ पे दिख रही है उतना ही मूवमेंट ऑफ एक्शन के साथ मार्केट कंटिन्यूड द गेम. With the continuity, market tend to break and sustain in the zone, right? So break okay, sustain hua. What are the steps that you will be looking? Scenario 1. In the scenario 1, what are the major things that you will be looking at the current point of actions? First, you will multiply this zone of actions and do a multiplied version, 150% rejection lenge. Uske baad, we will allocate the separate scenario allocations through the next point of actions. Right? यहाँ पे with this point of action, this is the scenario 1. What is the scenario 2 that I will be looking over here? जितना movement हमारा यहाँ पे दिख रहा है उतना ही movement of allocations मैं continuity में multiplied version में allocate करूंगा through the retracement point. राइट जैसे ही रिट्रेसमेंट पॉइंट के साथ अलोकेशन हुआ, रिट्रेस कितना हुआ मार्केट, फिर से वी विल टेक टू सिनेरियोस ओवर हियर. सिनेरियो 1 जो हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट था उसे मल्टीप्लाई करेंगे. ऑन द ब्रेक थ्रू कंटिन्यूटी दिखी थी, कंटिन्यूटी के साथ मार्केट टेंड टू टेक द रिजेक्शंस. 200% से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, कंटिन्यू किया. else I will take the entire movement of the body zone of this candle which is at the last point of action, multiply karunga and I'll keep only in the body. Wick will not be taken under the consideration at this current point of actions, right? Post market gave a break, market took a rejection from the same point of actions. What do we notice? We have an inducement. Inducement में rejection कितना आया हमारे को यहाँ पे? जितना हमारा previous retracement point था उतना ही rejection यहाँ पे लेते हुए दिखी. उसके साथ inducement का movement, this green candle will be taken under the consideration and kept under the movement post the retracement point. Market ने क्या किया? Market gave a break. Post giving the break, what did market tend to do? Market took a rejection from 150% again, right? Post marking of 150%, what is the next steps that we'll be working over here? The next steps we'll be working in allocations of the demand zone. So this will act as my current demand. Retracement कितना होगा यहाँ पे? जितना मेरा previous demand generate होते हुए दिखी है उतने का ही retracement आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी. With this point of actions, what are the next steps that I'll be following? The next steps I'll be following is जितना मेरा previous demand है उसका allocation के साथ movement plotting, right? Break हुआ था scenario 1 पे, multiply 150% rejection point of action देखेंगे, राइट? सो अगर वो सिनेरियो को अगर कंसिडरेशन पे नहीं लेना है, कंफ्यूज हो रहा है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल लुक एट? जितना प्रीवियस डिमांड का मूवमेंट अलोकेशन है उतने का पॉइंट ऑफ एक्शंस में अलोकेट करो पोस्ट द रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शंस, राइट? दिस इज द रिट्रेसमेंट पॉइंट. विद दिस रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शंस मार्केट टेंड टू ब्रेक एंड कंटिन्यू. 200% में रिजेक्शन, रिजेक्शन के साथ रीबैलेंस बॉन्डर के साथ मूवमेंट अलोकेट हुआ था फिर से.
right? So this is the retracement point, multiply it, allocate it again for the next plan of action. Plan of action number one, wick creation point से multiplied version 200% से फिर से रिजेक्शन. मार्केट में मूवमेंट कितना आया, जितना हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड हुई है यहाँ पे, उतने का ही मूवमेंट यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी थी विद द रिजेक्शंस कंटिन्यूटी. How do you look into the circumstances of the rejections perspective? This will act as the point number one of the supply, जो कि हम इस पॉइंट ऑफ एक्शन में अलोकेट करेंगे. एंड रिजेक्शन कितना लिया, वहां से ही उसी पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ वी हैड अ रिजेक्शन, right? At the current stage of actions, the market is moving into the bullish directions. How do you look for an allocation point? The allocation points will be taken under the considerations to two major consecutive ways. First, हम bullish scenario से bearish scenario को convert होते हुए देखेंगे, right? So in this point of actions, this is the swing high, this is the swing low, and this is the retracement point. Let's do the math and check where exactly the market tend to take the reversal from. Okay. Swing high is 3057.653. 3057.653 minus swing low 3025.748. What is the formulative number? 31.905. What is the retracement point that we are having? 3047.782. डायरेक्शन इज बेरिश माइनस 31.905 जो कि हमारा फॉर्मुलेटिव नंबर है इनटू 1.618 जो कि हमारा गोल्डन रेशियो है. उसका टारगेट क्या है एट द करंट स्टेट ऑफ एक्शंस? द टारगेट्स इज एट 2996.160. Okay, so what are the next steps that we'll be looking at this current point of actions? The current point of actions will be moving towards the 1 hour time frame. In 1 hour time frames, what are the major things we'll be noticing? In 1 hour time frames, the major thing of allocations will be in perspectives of the POI range. How do you take under the consideration post the mapping of the 4 hours mathematical numbers? Allocations will be looked in perspective of each and every circulating supply moments. So point of action number one is taken under this point. Multiply the version, you will identify the next. Okay, so with this point of action we had a rejection. कितना rejection लिया था market ने, जितना previous demand allocate हुआ था यहाँ पे, उसका ही point of interest में we had a rejection. Continuity 150% फिर से rejection दिखने को मिली हमको यहाँ पे इस point of action पे, right? So let's mark out the 150% rejection point. With this rejection point, market tend to continue in the directions. So whatever the previous supply is in the act, that will act as your current supply. With the current supply of the moment, the market tend to break and continue. A scenario 2 allocation के साथ यहाँ पे 200% से rejection लेते हुए दिखी थी, right? Again, if you want to change the scenario, जितना हमारा previous demand है उतना ही allocation लेके placement of retracement देखेंगे. जितना ही हमारा previous allocation point है उसे ही allocations के साथ allocate करेंगे at this current point of actions. We had a rejection from the same perspectives. उसके बाद जितना मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखी है सप्लाई की, उतना ही मूवमेंट फिर से रीअलोकेशन के साथ कंटिन्यूटी में allocate करेंगे, right? Post allocating the movements, what are the next steps that we'll be following at the current range of actions? Market continued, so double the quantity, 150% rejection, right? So post 150% rejections, कल के दिन में we had a selling pressure over here. उसके बाद we had a circulating supply over here. With this circulating supply, market tend to break at the first point. उसके बाद जितने भी लोग running में trades execute किए थे उनको out किया market ने. उसके साथ at the current stage again the movement is creating a circulating supply. How do we look into the circumstances of the next point of actions? The next point of action circumstances will be taken under the consideration to the previous.
So in this scenario, the previous circumstances is taken with the point of action of this, which will act as 1. So with this point of action number 1, we will look for an allocations through the wick range of action point. With the wick range of action point, there is a big break and continue. With the break and continue, multiply the version, 150% is the rejection point of action again. So in this scenario, let's mark out 150%. With the 150% rejection point, what are the steps that we are having? The step of actions will be taken under the considerations of the previous, जो कि in this scenario will act as this, right? So 150% से रिजेक्शन लिया मार्केट ने यहाँ पे, उसके साथ कंटिन्यूटी में कितना मूवमेंट आया, जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई जनरेट होते हुए दिखी थी बुलिश मूवमेंट में, सॉरी जितना हमारा प्रीवियस डिमांड जनरेट होते हुए दिखा था, उतना ही मूवमेंट ऑफ एक्शन यहाँ पे हमें कंजर्वेटिव वे ऑफ एक्शन में दिखने को मिली थी, राइट? पोस्ट दैट ब्रेक कितना मिला था हमें यहाँ पे, जितना हमारा मूवमेंट ऑफ एक्शन जनरेट होते हुए दिखा है, उतने का ही मूवमेंट एक्शन प्लान बिल्ड होते हुए दिखा था ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ द डिमांड. So is point of actions mein, what are the next steps that we'll be looking under the considerations? The next steps that we'll be taking under the considerations is in the movement of the bullish. So that is the previous supply will act as point 1, which is in this scenario this point of action. This point of actions will take under the considerations of 2, which is break, continuity, multiply it. Action point is 150% and 200%. Rejection, कितना रिजेक्शन लेगा मार्केट, जितना यहाँ पे डिमांड जनरेट होते हुए दिखी है, उतना ही मार्केट विल टेक द रिजेक्शंस. पोस्ट रिजेक्शंस मार्केट टेंड टू कंटिन्यू. हाउ डू यू लुक फॉर एन अलोकेशन पॉइंट ओवर हियर? जितना हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन में ग्रीन कैंडल्स जनरेट होते हुए दिखी है, that will act as our current and that will get into the market position spectrums, right? Post that, what are the next steps? जितना हमारा demand area of allocation था, उसे ही double out allocate post the wick range of action, क्योंकि यहाँ पे break of structure generate होते हुए नहीं दिखी थी, right? So, and this scenario will be taken under the considerations in the 15 minutes, not in 1 hour. So what are the steps of actions that you will be following over here to allocate the mathematical numbers? For the mathematical number allocation points, the what is the previous swing that we are having at the current stage? This one or this one? You guys let us know which one to be taken at the current scenario. उससे पहले I will be doing a small math and allocating the stuff for myself. So this is my swing low, this is my swing high, this is my retracement point. ये क्या हो गया? स्पेस बार दबा रहा हूँ. Okay. So this will act as my swing high, this will act as my retracement, this will act as my low point. Right, let's do the math and check what is the movements that we are looking under the current consideration points. The current consideration points of swing high is 3017.788 minus 2999.251. What is the formulative number? 18.537. What is the retracement point we are having at the current stage? 3010.052 into plus 18.537 into 1.618. What is the formulative number at the current stage of actions? What we are getting? The formulative number that we are getting is 3040.04. Right? This is the next plan of actions which will be taken under the considerations of the movement till the next. 3040.044. Post allocations of the high marking point of actions, what are the next steps we'll be taking under the considerations? The next step we'll take under the considerations of 15 minutes.
And how does 15 minutes currently look like? The 15 minutes is in the beautiful range of actions which will be taken under the consideration from each and every point of actions to the allocations. Right? Exactly. फर्स्ट टारगेट हमने लिया था, सेकंड टारगेट, थर्ड एंड फोर्थ ये भी कल के दिन में लिए थे. क्लोज होने से 2 मिनट पहले कहा था यहाँ पे S2 सिनेरियो बिल्ड होगा, S2 B1 के साथ ट्रेड एग्जीक्यूशन अगेन. Right? So with this point of action, this will act as my current scenario of 1. With this point, what will be the marking allocations that I will be looking over here? This point of actions, with this, the continuity of the moment. Right? Post the moment is allocated, market ने कितना rejection लिया, जितना हमारा demand action plan था, उतने का ही movement यहाँ पे regenerate होते हुए दिखी थी. With this regeneration point of actions, जो हमारा previous supply action में थी, that will be taken under full consideration because that was one of the range of POIs. With that point of action, we will allocate the next through the inducement range. राइट. पोस्ट इंड्यूसमेंट रेंज मार्केट टू के रिजेक्शन के हिसाब से कितना मूवमेंट अलोकेट होना चाहिए, जितना हमारा लास्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट इज देयर इन द एक्शन दैट विल टेक अ कंसिडरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन, उतना ही रिजेक्शन लेके मार्केट कंटिन्यू की थी, कितना अलोकेशन होगा, जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई इन द एक्शन होगी, that will act as 0.1. With the 0.1 multiply the version, 200% से हमें एक रिजेक्शन दिखने को मिला था यहाँ पे. विद दैट रिजेक्शन मार्केट इज ट्राइंग टू बिल्ड अ प्लान ऑफ एक्शंस टू द नेक्स्ट. रिजेक्शन कितना हुआ है यहाँ पे, जितना हमारा इंड्यूसमेंट रेंज ऑफ एक्शन यहाँ पे बिल्ड आउट में दिखी थी, उतना ही मूवमेंट यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट में दिखेगा. पोस्ट रिट्रेसमेंट प्लान ऑफ एक्शंस, what are the next steps that will be looking under the considerations, जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई इन द एक्शन है वही करंट में दिखने को मिलेगा आपको. So in this scenario, this was my supply, copy, paste, and allocate. Where do you see the market taking the rejection from? Same point of action. What is the mathematical number in 15 minutes that you will be working at the current stage of actions? Current stage of actions में allocate करना है. Simple, swing low. Yeah, swing low. This will be a swing high. This will be a retracement point. Let's do the math and check what is the directions that we are getting at the current stage of actions. 3020.884 minus 3012.416. What is the formulative number? 8.468. What is the retracement point? 3015.825 plus formulative number 8.468 into 1.618, जो कि हमारा टारगेट आके 3029.52 है, हिट हो चुकी है. सेम चीज इंटरमीडिएट रेशियो के साथ हम देखेंगे एट द करंट स्टेज 3015.825. डायरेक्शन इज बुलिश प्लस 8.468 फॉर्मुलेटिव नंबर इनटू 2, जो कि टारगेट आके 3032.761 है. Right, let's mark out that number and check where exactly the market is tending to take the rejection from. 3032.761. Right, so we have an exact rejection from the same perspective point of actions. Right, uske saath what are the next steps that you will be looking over here? Now there is a break in the market, there is a continuity in the market. So what are the steps that you will be looking next? The next step of action will be at this point of action. The retracement point will act with this point of action, and where the POI ends, that will be a swing low. Right, in this scenario, let's do the math and check what are the next targets that we are having at the current stage of actions. 3025.279 minus 3016.007. What is the formulative number? The formulative number is 9.272. What is the retracement point that we are having? 3021.799 plus the formulative number 9.272 into 1.618. The target is 3030. हिट हो चुकी है. उसके बाद नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन के साथ जब बैठेंगे, इंटरमीडिएट रेशियो, how do you look into the perspective of that? 3021.799 plus 9.272
into 2, the target is 3040, जो कि हमारा 1 hour का long target है, right? So that will be in the action plan to the current scenarios of looking into the markets, and we will hold the trail till this point of action. Okay, 3040.343. Any doubts you guys are having over here, guys, in gold? If not, we'll move to BTC. किसी को भी कोई भी डाउट है, please do ask, else I'll be moving to BTC. Clear, no doubts. Good morning, Karthik. Okay, no doubts, right, guys? So we'll move to BTC now. Starting with daily time frame, what are the steps that you will be looking into the circumstances of BTC? Beautifully moving, beautifully hunting, beautifully giving the price actions, and great, great, great compounding structure is built in BTC at the current stage of actions. How do you act into the considerations of the previous? Starting with the marking of the POI range. So with the POI range, what is the movement that we have got at the current point of actions? Whatever you are noticing at this point of actions will take under the considerations of the inducement range. Inducement range के साथ markout के साथ we will look for an allocation of buyer's allocation point,
At this scenario, this is our buyer allocation point. With the buyer allocation point, what are the next steps that we'll be working on? Identifying the internal liquidity point. Where is the current internal liquidity point that we are looking? The current internal liquidity point is at the price action of this green and red body candles. This will act as our internal liquidity. Post internal liquidity, this is the moment of demand what we are currently having. With this demand of action multiplied version, post S2B1 setup, we will be allocating. And what do we notice at the current stage? We notice a break of the wick, but the body closure prior to that. This was one of our mathematical numbers, so we will take under the consideration of this point, which will be acting as the buyer's main support. Right? With this point of actions, what are the next steps into the considerations that you will be taking at the point of action one? The point of action one, you will be drawing the supply. सप्लाई ड्रॉ करने के बाद रिजेक्शन कहाँ से लिया मार्केट में? रिजेक्शन मार्केट ने जितना प्रीवियस मोमेंट ऑफ अलोकेशंस इन दिस सप्लाई वाज जनरेटेड, that will act as your current movement plan of demand. With this plan of actions, जितना हमारा previous supply था वो multiply होगा उसके साथ continuity में allocations. What do you tend to notice over here? Where does the market taking the rejection from? From the same point of action जहाँ से rejection लेना चाहिए. Right? So post that, what are the next steps that we'll be doing? Coming down to 4 hours, what are the mathematical calculations that we'll be working on? The swing low remains the same. This red candle high will act as your swing high. This red candle low will act as your retracement point. Let's do the math and check what are the numbers that we are getting at the current stage of actions. The swing high is at 82 241.52 minus 76681.05. What is the formulative number that we have got? The formulative number is 5560.47. What is the retracement point we are having at the current stage? 79039.75. Sorry, 70. What are the next steps that we'll be working over here? The next steps we'll be working over here is in doing the math of 79039.70 plus formulative number 5560.47. What is the golden ratio into 1.618? 88,036 target hit ho chuki hai at the current point of action yahan pe. Then the intermediate ratio, how do you identify the intermediate ratio? 79039.70 plus 5560.47 formulative number into 2 intermediate ratio ka number. What is the value at the current stage that you are getting? The value at the current point of stage of actions that you are getting is 9016 So this is the next target of allocations that we'll be looking at the current stage of actions of 4 hours. Right, post marking of that, what are the next steps of the allocations that we'll be taking under the considerations? Market कितना movement दिया था? यहाँ पे we had one demand range of allocation. Post that demand range of allocation, market continued with the retracement. Multiply version, this is your rejection point of actions which took under the considerations of 150%. So break one, post break one, multiply it, continue at 150% के साथ rejection देखने को मिली थी हमें यहाँ पे. Allocate the rejection point of action. सप्लाई कितना बिल्ड हुआ? जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई इन द एक्शन था उतना ही मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिली थी, उसके साथ कंटिन्यूटी. Right? Post that plan of actions, what are the next steps that we'll be taking under the considerations at the point of actions? Post this, what is the movement allocation that you will be looking at? 150% rejection at the current stage we are having? Yes, we do. राइट मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया था. कितने सिनेरियोस में देख सकते हो? 2 सिनेरियोस. वन एंटायर मूवमेंट ऑफ द बेरिश पोस्ट द सप्लाई, that will act as your scenario 1, जो कि आप multiply करके play out कर सकते हो at this current stage. With this point of actions, do we have a rejection? Yes, we do have a rejection from the same point of action. Second scenario, the last 2 red candles will be taken under the point of action, and with that point of action, multiplied version into 150%, and the rejection market tend to continue. Right? So post mapping of this, what are the next steps that we'll be looking over here? The next steps we'll be looking under the considerations of 2 point of actions, which will be taking at the point of actions, which is the entire previous supply will act as 1 from this point of action till the rejection of the red candle will be taken under the considerations and placed at the current point of actions. Right? Where do we tend to see a rejection from? From the exact point of action, where does the market taking the rejection?
Post this, what are the next steps that we'll be looking at the current stage? Come down to 1 hour. In 1 hour, what are the major things to be identified at the current stage of actions? एक सेकंड, गलत मार्किंग क्या हो? 4 hours में वो गलत मार्किंग हुआ है लास्ट वाला, एक सेकंड वेट कर लो. Okay. So now coming down to 1 hour, what are the major steps we'll be looking under the considerations at the point of interest of allocation, the supply. Point of interest number one, जो हमारा ये supply point of action है, that will act into the consideration of the second post the rejection. Rejection कितना लिया था market में, जितना point of interest का movement चाहिए उतना ही rejection लेके continuity में मार्केट गया था. यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जो हमारा लास्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन है उसी को ही कंसिडरेशन में लिख सकते हो. विद दैट कंसिडरेशन मार्केट टेंड टू blow out at 200% and continue the movement. Right at this point of actions, what are the measurements that will be taken under the considerations? The entire movement will act as point number one. With the point number one, multiply the version with the multiplied version allocations. Post allocations, we see a break and continuity. 150% का rejection आपको दिखने को मिलेगी. Right? Post 150% of the rejections, what are the next steps that you will be looking at the current point of actions at the current stage? Rejection कितना लिया, जितना हमारा previous point of action है उतना ही rejection यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा. At this current stage, this will act as the wick. Post the wick, multiplied 200% में rejection, right? And what is the continuity that you can look for? Whatever the moment of supply that you have got post the rejection of the retracement, that will act as your current. With the current, the movement continued, right? Post this movement continuity, what do we see? Do we have a rejection? Yes, we do have a rejection, right? Single candle rejection. So single candle prescriptions, which will be taken under to the previous of this, will be marked at the current state of actions. With the current state of actions, market tend to continue. Multiply the previous supply and allocate it, right? What do we notice? Do we have an exact rejection from the point of interest of 1 hour? Yes, we do. What are the next steps that we'll be looking at the current stage of actions? The current stage of actions, we will consider this as the swing high, swing low, and retracement. Target hit ho chuki hai. What are the next steps that we'll be looking over here? This will act as the swing low, retracement, and the swing high. What are the next formulative numbers that will be taken under the consideration for the mappings? The consideration mappings will be considered through the 2 point of actions. The 2 point of actions will act in the scenario of 88530.91 minus 87064.41. What is the formulative number? The formulative number at the current stage of action is 1466.5. Taking under the consideration of the retracement point at this current stage, where the retracement point is being under the consideration, the level of this is this. So let's mark out 87675.31. 87675.31 plus or minus 1466.5 into 1.618. What is the targets that we are having at the current state of actions? That current target that we are having is of 85302.51. Too huge. Okay, so plan of action number one is taken under the considerations. What are the next steps that we'll be looking over here? Do we have a supply and demand range allocations? Yes, we do. So this is the previous demand. With the previous demand, what is the retracement that we have got? The retracement is through the previous demand, which gets converted into the current supply. Allocation of the supply, there is a movement. Post the movement, what is the demand, what we are having at the current stage? That will get an act
at the point of interest of 1, there is a break, continuity, 150% rejection. Yeah, 200% rejection. Post that, whatever the demand you're getting into the plan of actions will be considered in the movement. With the movement action plan, we will multiply it and allocate it at the current state. What do we notice? We have a break again at the same point of interest. So we'll keep into the mapping of the same and the continuity. First point of interest may, we will allocate the supply with the supply. What is the retracement that you will be taking? Whatever the movement in the last retracement of the bearish movement will act as your current. Right, post acting at the current stage of actions, what are the next step? Whatever the supply you have got in the actions of the continuity will be taking part over here. With this multiplied version is your next target. Do we have a rejection at the current scenario? Yes, we do. Right, so what are the next steps that we'll be following over here? Why did the fall start and continue at this point of action? This is the point number 1 to be taken under the consideration. With this consideration, what is the rejection that you will be identifying through? The rejection is your previous demand, which will act as your current. So the current demand was taken under the considerations of the mapping over here. Post mapping, the movement tend to continue. Right, first scenario, what you will be doing, you will be taking the entire body and allocating. Post entire body allocations, what do we notice? Is there a break? Then we will continue the movement plan of actions, else no. So in this scenario, this will act as my current. With the current, we will place the mapping at the point 1. With the point 1 mapping, 200%, yeah, 150% will be the rejection point of action again. In this scenario, we have 150% rejection. With the 150% rejection, what are the next steps that we'll be looking at? Step 1 will be taken under the consideration of 1 hour mapping over here. Jo ki in this scenario, this will act as 1. Market gave a break. With the break continuity, 200% rejection. Yes, 200% rejection. Post that, what is the next step that we'll be looking? We'll be taking the entire movement allocation of scenario 2, multiplying it and allocating it over here next to it. What do we see? We have a break and continuity. Yes, definitely we do. Multiply it, 150% rejection. What do we notice? Do we have a 150% rejection over here? Yes, we do. Right? So in this scenario, what is the movement of bullishness that you are identifying? The bullish movement is identified through your previous supply. With the previous supply, the allocation points will be taken under the consideration of the current. This is the considered movement at the current point of actions. We do have a rejection from the same perspective. How much will be the rejections at the current point? जितना हमारा previous point of action का rejection है, that will act as your current. With the current multiplied version, 150% rejection. Right, post 150% rejections, what are the next step that I'll be looking over here? Allocating of the previous supply. In this scenario, this is my entire supply, which I'll be taking under the considerations and placing it next to it. What are the targets that I'm having at the current state of actions is this. All right. So this is 1 hour. Any doubt, guys? No. So let's come down to 15 minutes. What is market trying to do in 15 minutes? Market is trying to correct itself by creating circulating supply each and every point of actions. With this point of actions, why did the movement get in generations of the first place? Right? The first scenario, कल के दिन में marking थी ये, right? With this point of action, 200% got completed. Right, post that, what is the second scenario that I'll be working on? The second scenario I'll be working on with the 5 candle markout. With the 5 candle markout, market tend to complete the movement. So here I'll be taking the consideration of 200% again. Post that, we did a markout on the explanation of Nilesh. So that movement will be taken under the consideration of entire demand movement, then allocation, right? So post this action plan, what did market tend to do? Market tend to create a movement action and continuity. In this will act as 1, post acting as 1, multiply the version, 200% rejection, right? So in this 200% rejection point of actions, what are the next steps we'll be taking under the considerations of the point of action 1, 2, 3. The point of action 1, 2, 3 is taken under the consideration of swing high 1, swing high 2, and retracement point 3. Right, let's do the 15-minute math and check what is the numbers that we are having at the current state of actions. 8826.62
minus 87,585.42. What is the formulative number that I'm having at the current state of actions? Current state of actions, I'm having a formulative number of 701. उसमें target hit हो चुकी है. What are the next steps that we'll be looking at? The next steps we'll be looking under the consideration of this green candle low and the green candle high, right? So what are the formulative numbers that we are having currently? 88286.62. उसके साथ what is the swing low we'll be taking under the consideration of 87384.41. What is the formulative number? 902.21. What is the retracement point we are having at the current stage? 87905.62. What is the math that we'll be working at the current state of actions? At the current state of actions, we will be working with 87905.62. Direction is bearish, minus 902.21 into 1.618. Let's look for a mapping at the current stage of actions. What is the mapping says? The mapping tends to say at the current point of action is we look under the considerations of 86428.02. What do we notice? Exact rejection perspective 1. With the exact rejection perspective 1, let's do the mapping for intermediate ratio, which is 87887.8 minus 902.21 formulative number into 2 intermediate ratio. The number we are getting at the current stage is 86083.38. Any doubts you guys are having at the current state of actions, please do let me know, guys. No doubts, clear. Excuse me, guys. Clear, no doubt, no doubt, no doubt. Okay, great. Now the price broke the intermediate ratio, so we will change the swing now. No, why will we change the swing? There is no continuity.
When there is a continuity, then we will take the actions to the next. Beautiful, guys. Next target is 3044. Chalo. Good morning, Pankaj. Good morning. Lovely, guys. अमित, आपका क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे दे देता हूँ. एंट्री कैसे लेनी है सर? राइट, बिफोर ट्रेडिंग लर्न टू द पीरियड ऑफ टीटीएस में फॉलो करना 2 years ऑफ बैक टेस्टिंग, 1.5 years ऑफ फॉरवर्ड टेस्टिंग, 1 month ऑफ लाइव एनालिसिस. उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ पे एंट्री लेना है. ओके. यस, डेफिनेटली यार, एक्सपायरी है, एक्सप्लेन करूंगा. कमिंग टू दैट पॉइंट ऑफ एक्शन. गिव मी 2 minutes, सांस तो लेने दो. Gold explanations goes like the Airbus and BTC explanations goes like supersonic. Coming to Indian sessions. Lovely, lovely. अगर ये किसी को पता है ये नंबर क्या है, उन लोगों को पता है ये मूवमेंट क्यों आ रहा है. Nifty, Bank Nifty, right? Formulation still remains the same, target remains still the same. No changes in the target, no changes in the movement, right? Only one small plan of actions. रिटेलर्स ट्रैप आउट को आइडेंटिफाई करो. यहाँ पे ट्रैप बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि इस पॉइंट ऑफ एक्शन में रनिंग में जो बैठे उन लोगों का, right? So in the perspectives of looking into the markets, what are the 2 steps that you have to be following in the bank nifty at the current stage of actions? One rejection perspective is to the previous. How do you look into the circumstances of the same? एट द करंट स्टेज सिर्फ कल के दिन में हम इंट्राडे में देख रहे थे कि एक सेलिंग प्रेशर आएगा तो इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे, राइट? स्विंग ट्रेड में अभी भी लॉन्ग के तरफ ही है, जो कि आज की मूवमेंट वो कंफर्मेटिव दे दी, राइट? विद इट प्लान ऑफ एक्शंस, निफ्टी क्या कर रहा है एट द करंट स्टेज? निफ्टी इज करेंटली शोइंग अ बुलिश प्रेशर, 1 2, राइट? ओनली एक चीज हमें यहाँ पे चाहिए, एक ट्रैप, right? I'm not talking about retailers trap, I'm not talking about any kind of trap. I'm talking about the trap which has been indicated through the candle knowledge, right? अगर confirmative actions में ये दो point of actions हमको साथ में मिलती है, then definitely continuously market will break and continue. कैसे? At the pressure action one, this is my candle one, right? जो कि green है, right? What is the next candle pressure? Red.
अगर ये जनरेशन दिखने को मिलती है, वेल एंड गुड, राइट। ये सिनेरियो अगर जनरेट होते हुए दिखेगी, डेफिनेटली मार्केट विल ब्रेक एंड कंटिन्यू। उससे पहले ट्रैप करने दो, एक कैंडल क्लोजर होने दो, चलेगा। बिकॉज बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में यहाँ पे सब लोग लॉन्ग के तरफ ऑलरेडी अलोकेशंस बनाना शुरू कर चुके हैं, राइट। Yes, definitely pressure is bullish at the current stage, no doubt about it. But only scenario that you will be working over here at the current stage of actions is एक फट करके ब्रेक करना है, नेक्स्ट कैंडल में कंटिन्यूटी में जाना है। This is the only price action for intraday I am looking at the current stage. Okay. Clear, sir. Thank you, Nilesh. सर 39 का प्रीमियम, 12 का 1500 पार। ब्यूटीफुल ट्रेड, थैंक यू सर। Lovely guys, beautiful. Good morning you. 3016 execution running at 3037, MTSL लेके चलो, MTSL at 3028. Good morning Ambika, you are late today. कल रात को अच्छा ट्रेड था, मिस हो गया। कौन सा ट्रेड? आपने तो बोला था आप शॉर्ट में हो, कल के सेशन में आपने खुद बोला था ना। कोई बात नहीं है, डोंट बी इन अ फोमो, इजीली आराम से बने रहना। रोज मिलता है यार ट्रेड्स, रोज। रोज मिलता है, रोज। वो भी 10% 20% का नहीं, अच्छे खासे ट्रेड।
Yesterday morning you said Bank Nifty will hit 5107 if it breaks the PDL 51440 and target achieved. How you calculated it even before retracement at 10.35 candle? Please explain. Definitely I will explain, Yogesh. Yogesh, sorry. Right? This is the number. Correct? वो मार्किंग कल का ही तो है, अभी तक है, देख लो. गाइस, आप लोगों को एक महीने के बाद भी समझ में नहीं आया ना कि मार्केट मैथ्स के थ्रू चलता है, तो जाके सर फोड़ लो आप दीवार के साथ. दीवार को मार के सर फोड़ लो. छोड़ो गाइस, आईसीटी छोड़ो, स्मार्ट मनी कैंसल छोड़ो, सब छोड़ो. अगर यस डेफिनेटली इफ यू आर हैविंग अ गुड एक्यूरेसी, डू इट. आई एम नॉट सेइंग नो. अगर पता ही नहीं है आप लोग क्या कर रहे हो, राइट, उस पॉइंट ऑफ एक्शन में हाउ विल यू टेंड टू अंडरस्टैंड अ मूवमेंट? फेयर वैल्यू गैप्स पे ट्रेड करना है बोलते हो, रिट्रेसमेंट में ट्रेड करना है बोलते हो, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करना है बोलते हो. बताओ इधर कौन सा मिटिगेशन ब्लॉक तुम्हें काम किया, कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम किया, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम किया? कौन सा भी नहीं किया ना. आप लोग बोलते हो प्रीवियस कैंडल, आज तक मैंने प्रीवियस कैंडल को लेते हुए डालते हुए देखा है? नहीं. तो कुछ भी. फॉर मी आईटीसी इज अ हिल सर. Please explain mathematical calculations. Definitely, I will explain mathematical calculations. Recipe book, ooh, how many times is that? 40x. भाई जो चीज मार्केट में काम नहीं कर रहा है उस चीज को लेके क्या कर रहे हो? रिस्क टू रिवॉर्ड बिना फॉलो किए 1:1 लेके चल रहे हो. कुछ भी. गुड मॉर्निंग अरुंधति मैम. नहीं सर, कल रात जो 12:30 1 बजे तक आया. 1 बजे 12:30 को कौन सा ट्रेड था सर? बीटीसी में हो भी. आप इंडियन टाइमिंग में देख रहे हो ना? 12:30, 1 o'clock. जनाब आप मेरे को ये बताओ पहला. ये टोटल मूवमेंट आके हमारा 2400 पॉइंट्स का है, राइट? उसके बाद आप 1000 पॉइंट के लिए रो रहे हो, राइट? तो छोड़ो ना. नींद क्यों हराम कर रहे हो रात भर बैठ के? सुबह से तो ट्रेड कर ही रहे हो. अच्छे अच्छे से नाइट में सो यार. हर एक ट्रेड पकड़ने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू.
right? So always remember one thing, right? Mind needs the space to observe and observe. ऑब्जर्व करने के लिए अटेंशन ग्रैबिंग जो होती है ना, वो ऑब्जॉर्प्शन के हिसाब से होती है, राइट? अगर तुम माइंड को ऑब्जर्व करने ही नहीं दे रहे हो फॉर 4-5 hours, how will you sustain? It will be a very difficult process for you in a life, means आगे जाके लाइफ टाइम पे। ओके पंकज, प्लीज इतना स्ट्रेस दो ही मत दिमाग को। नितेश, तुम जो स्ट्रेस दे रहे हो, मैं स्ट्रेस का दे रहा हूँ मैम? मैं स्ट्रेस तब लूंगा जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाएगा, एंड वो भी स्ट्रेस तभी आएगी मेरे को जब वो 10 बार के ऊपर मेरे अगेंस्ट जाएगी। वो इस जन्म में होने से रहा। सो आई एम चिल। इतना कॉन्फिडेंस। यस। राइट। ये विक जनरेट होने से पहले ही मैंने बताया था यहाँ पे कल के दिन में, इधर S2B1 सेटअप क्रिएट होगा। इससे ज्यादा चाहिए? एक हफ्ते रुक जाओ। ये जो एब्रिवेशन क्रिएट हुआ है ना, 1 पॉइंट एंड दिस 2 पॉइंट, इसके ऊपर भी एंटायर रिसर्च इज गोइंग ऑन। अगर ये हम पकड़ लिए ना, it will be a really next level game that you will be seeing at TTS. सिंपल स्टेप फॉलो करना है आप लोगों को। S1, S2, ये दो छोड़ के कोई और कर रहा है मार्केट यहाँ पे? नहीं। राइट? देन व्हाट इज द प्रॉब्लम यू गाइस आर हैविंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे ऊपर क्यों ये कर रहा है? नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम सेइंग इन जनरल। So true, you had said about S2B1 setup before closing the stream.
Dhananjay, good morning. I really enjoy watching this live videos. Thanks for keeping them coming. I really enjoy watching this live videos. Thanks for keeping them coming. मतलब समझा नहीं. If you can explain me out. All the new members, जो भी doubt है पूछो. Follow the simple step. जिसे भी market में काम करते हो, 2 years of back testing, 1.5 years of forward testing through relay bars. With that, you guys will be working on 1 month of live analysis, then small execution to gain the confidence. उसके साथ fearless trading, fearless trading with proper risk management. With that, emotionless trading, जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Carry the poker face when you're in the directions of the math. No FOMO trading, no impatience-full trading. Sit patientfully till the target hits. Am I clear? Clear. In gold, about the recent S2B1 formation, I did not get it entirely as multiple candles were in the range for long time. Movement was between 815 to 830 candles mostly. One time it seems to resemble S2B2 but not entirely. Please explain S2B1 formation there. Thanks. Definitely. Right? Indian timing 8:30. Yes. So what is the setup that you look for S2B1? Batao, Sumit. What is the major thing that you have to have in S2B1 at first place? A drop or a rise and then a reversal entry mostly on third candle in the direction.
Wrong. You have understood S2B1 at wrong stage. Right? Always remember what you said is in the scenarios where is a movement directly going. Rest of the times, what are the major thing the market will tend to do? Market will create a wick, second candle closure, third candle continuity. Correct? So in this formation, what you are talking about, a body closure is also good, second candle closure, third candle continuity. But major setup of S2B1 is of wick creation, right? On the reversal zone of mathematical number. So in this scenario, where do we notice the exact wick creation happened? The wick creation was on the exact 830 candle, right? Suppose that market tend to close, with that there was a break. Here your execution, with this execution point of action, 40 pips SL because New York session. Right, let's calculate 40 pips from the point of action of execution. This is the execution point. Say me one thing, what did the market tend to do over here? It didn't even close below your execution point. Right, Sumit? Good morning, Anupam. Have a great day ahead. You too, man. I heard that you have been on a vacation. How is it going on? Sir, for London and New York sessions, SLS 4 points for gold and 40 points for Bitcoin. Sir, no, sir. 4 points for gold, 400 points for Bitcoin, not 40 points. Okay. Asian session may 2 points for gold, 200 points for Bitcoin. Don't take it in a wrong way. I'm doing good. Went for a small vacation, so didn't come on live. No worries, man. No worries at all. Hope you had fun. Vacation was good, sir. Thanks. I'm back now. Great. The continuity of winning streak continues from today.
I've taken a long trade now, sir, at 3032.5. थोड़ा जल्दी हो गया, but no worries. 3 more minutes, guys, on the candle closure. Whatever doubts you guys are having, you can just post it in the comment. We'll try to rectify the issues for you guys. Anupam, from tomorrow, start working on compounding. Okay. Good morning, Faisal. Good morning, Mahesh. Noted, sir. Ankit, can you explain POI? Definitely.
Okay. In sideways market, what the market will try to do? So here in the sideways zone, market will tend to create a price action, right? So wherein there is 2 point of actions which will be taken under the perspectives, which will be acting as both the range of actions. मतलब यहाँ पे आपका सपोर्ट भी हिट होगा, आपका रेजिस्टेंस भी हिट होगी, right? At this point of actions, what did the market try to do at this point of actions? The market will trend to bend the circulatives, right? But in the POI, it's not like that. So, what are the circumstances that you will be looking over here? In the circumstances of the movement plan of actions, you will be looking under the considerations of 2 points. Just give me a moment. Okay. So this is the plan of actions that you will be looking into the considerations of the movement. What will market do in a sideways zone? From the resistance level, market will try to give a movement. How? So in this scenario, if the market is moving from a sideways zone, it will come to support. From support, it will come to resistance. From the resistance, it will come to support again with the same point of actions.
right? But in the POI range, what will the market try to do at the current state of actions, right? One support will act to the resistance. Post that, what will market try to do? Market will not come back to the support. It will play in the same zone, right? So between the support and resistance where the market tends to play an order, right? Then immediately it goes to the resistance. With the resistance, market will try to come down, but it will not play at the support again, right? It will play in between the zone of the range again, then it will come down to the support and the continuity till the resistance, and at the top point of action it will play again without coming down, right? So this is a POI range. What happens in the POI range? In the POI range, the market will tend to create iceberg orders, right? What are iceberg orders? Where the market will not give you an indication of high volume orders, nor the break of characters which you will be able to identify, right? In this point of actions, market क्या करता है? Market एक point of action में break करके one shot में continue करती है, right? So this is POI range. Always remember, the POI range is built to create an iceberg order. आपको पता भी नहीं चलेगा वहां पे इतना बड़ा बड़ा quantities place हुआ होगा, right? That is the zones of identification of an POI range. ओके, बट साइडवेज जोन क्या है? बहुत आसान है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, उसके बीच में खिलता रहेगा, बट नॉट इन द पीओआई। पीओआई में जब जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड होती है, राइट, तब तब रिटेलर्स यहाँ पे क्या करेंगे? ऊपर से रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, राइट? रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे फिर से एक प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड करेगा, मार्केट जैसे ही नीचे आती है, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू ड्रॉ द सपोर्ट, right? In this point of action, market will try to hunt them out, right? जो आप लोग सोचते हो ना कि institutions will wait for retailers to place an order in support and resistance, हमारे पास उतना टाइम रहता ही नहीं है। आप लोग कहाँ एसएल प्लेस कर रहे हो, right? So in this scenario, we will look for the mathematical numbers. With the mathematical numbers, we will allocate the point of actions in the zone, right? But यहाँ पे retailers क्या कर रहे हैं? Okay, उनको पता है यहाँ से rejection लेगा नीचे के लिए, but जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाएगा मार्केट, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में थोड़ा देर खिलाएंगे, उसके बाद रिजेक्शन लेगा, सब लोग शॉर्ट के लिए बैठेंगे, उसी शॉर्ट के साथ हम कंटिन्यूटी में लॉन्ग के लिए फिर से मेजर क्वांटिटी ऐड ऑन करके रिवर्सल देखेंगे, okay? So this is the major play of actions that we'll be looking in the considerations of a POI zones, right? So let me showcase you the scenarios in any of the charts you want, right? Starting with the zone of action into the considerations of retailer's perspective, okay? So let's draw the mark 1, okay? And let's draw the mark 2. Sorry, let's draw the mark 2. राइट? क्लियर कट प्राइस एक्शन है, मार्केट ने ब्रेक लिया डेफिनेटली, उसके बाद लोगों को यहाँ पे बिठाया शॉर्ट के लिए विद द प्लान ऑफ एक्शंस, बट मार्केट नीचे गया नहीं, मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट कंटिन्यूटी में ऊपर के लिए आई, करेक्ट? So that is how the trap happens in the POI range, right? Let's look it into a different perspective of understanding it in an even better way, right? You guys give me a chart, with that chart you guys give me a date, I will do it for you guys and showcase you how does it happens, right? In this scenario, what did market tend to do? Market में recent यही लेता है, ठीक है? ये मेरा resistance है, draw कर लो, right? So उसके साथ this will act as my resistance, this will act as my support, okay? So this is the plan of actions which everyone is following. What did market do?
डेफिनेटली वन पॉइंट ऑफ एक्शंस, नीचे आया, ऊपर जाके नीचे आई, करेक्ट, फिर से ऊपर गया, लोगों को यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन 2 डालने के लिए मिल गई। उसके बाद जब नीचे आया, डिड इट टच द सपोर्ट? नो, प्लेड इन अ जोन, राइट। उसी के साथ मार्केट ऊपर गया, करेक्ट। व्हाट डिड मार्केट टेंड टू डू? प्ले इन अ जोन। क्या मार्केट यहाँ पे नीचे आते हुए दिखी? नहीं। सो व्हाट डिड द मार्केट टेंड टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन? S2B1 सेटअप फिर से क्रिएट किया। उसके साथ व्हाट डिड मार्केट डू ओवर हियर? हर एक लोगों को यहाँ पे शॉर्ट के लिए बिठा के मार्केट गेव ए ब्रेक एंड कंटिन्यू इट, right? That is how we look into the perspectives of the movement of the allocations. Good morning, Patel. How are you? Okay, Ankit, hope you got the point. Same scenario BTC में भी दिखा देता हूँ so that it will be easier for you guys to understand. This is like I am looking for the position. आप लोग date और time बताओ, मैं वहाँ पे दिखाता हूँ. I don't want to hunt and I don't want to do it in that way. Okay, Ankit, hope you got the point. Okay, sir, thanks. Lovely. यहाँ से बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ड्रॉप आने वाला है. Whatever doubt you guys are having, please do ask.
If Nifty decides to stay sideways for the rest of the day from this point, then what formation to look for that will indicate there won't be any substantial movements. Very easy to identify. At this point of action, you will see a lot of wick generations, both buying and selling sides. If you see more than 4 candles, समझ लेना first half वो sideways में जाएगा, right? Any chart, just not Nifty, any chart, if there is a wick generations of both the sides and indecisive candles create हो रही है, remember that post the fourth candle, market will tend to stay for some point of time in that zone. Okay, that we won't be calling it as sideways, that we'll be calling it as POI. Okay, clear, Nilesh? Anupam, what will be the steps that you will be following at the current stage of actions? On the move, gold. Yes. So, what will be the steps? Took entry on gold, sir, at 3035.070. Okay. Okay.
Now I will wait for the market to move in my direction till it reaches MC levels. Perfect. Good job, Anupam. Keep it up. सर आपके मुंह में दही शक्कर बैंक निफ्टी गिरना शुरू हो गया. ऐसे बातें मत करो यार. 30 pips running. Great. 40 पॉइंट को गिरना शुरू हो गया बोल रहे हो आप लोग. सच में बोल रहा हूँ अंबिका. 40 पॉइंट को गिरना शुरू हो गया बोलोगे ना नेक्स्ट टाइम. देख लो क्या करोगे. ब्यूटीफुल गाइस. Sir, please explain your mathematical functions and how to identify this inducement point. SR lifestyle. First, watch मैथ ये क्या होम टैब में जाओ. मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करके एक सेक्शन है उसे देखो. उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड करके एक सेक्शन है उसे देखो. उसके बाद आके लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम डीओ है वो सेक्शन देखो. राइट. पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शंस start back testing. When you back testing, 2 years of back testing for crypto, 1.5 year for Indian sessions, and continuity. What are the next steps that you will be looking in the current scenarios? इस टाइम पे जब डाउट आएगा तब पूछना. ओके. नॉट डायरेक्टली. नहीं 40 पॉइंट सब कुछ नहीं है. 300 पॉइंट के ऊपर गिरता है बताओ. उससे पहले नहीं. What is the logic behind predicting bank nifty drop? Liquidity grab or trap? I just said it for fun, Suman. Wix says a lot, sir. I've taken my entry on basis of Wick at 15-minute candle. Sir, hopefully trying to understand the structure which market creates. Thanks for making us understand what should be the thought process before taking the trade. That's right. I've learned a lot from you, sir, and RBG too. वरुण से क्या सीखा आपने? Keep learning and keep glowing, guys. तेरी बाहों में तेरी सांसों में
Still a long way to go, Anupam. You will definitely do it. I know that. ट्रेड में बने रहने का गुण सीखा सर आरबीजी से. सही है. This is the beauty of you, RBG. You are a champ. वो तो है. बंदे में वो क्वालिटी है. No doubt. Yes, sir. Small baby steps and taking, sir. Great. सर मजाक मत करो सर. आपने शॉट नीचे आएगा मजाक में तो नहीं किया है. जैसे आपको समझना है वैसे आप समझो. वो आपकी मर्जी. वो भी एक्सपायरी के दिन उतना आसान पैसा दे दे मार्केट. तो हो गई बात. वो भी बैंक निफ्टी. नाइस. So circulating supply generated in 15 minutes from 5 a.m. to 8 a.m. अभी नहीं और थोड़ा बड़ा बनना है. बहुत छोटा हो गया है. वेरी स्मॉल जोन. Stream will be there for next 1 hour. जो भी डाउट्स है पूछ लो.
Keenly waiting for Sunday part 2 video regarding Indian indexes. Sure. Thank you so much. आ जाएगा आ जाएगा। वर्षा गलती से कुछ भी अलग मत डाल देना। यस, पहले ही इंडिकेशन दे दे रहा हूँ। Bank Nifty moving up now. Yes. वरुण MTSL ट्राइड रखना. Smita ma'am, Arundhati ma'am, Hugh, everyone.
हाँ, बैंक निफ्टी, दैट्स राइट। वेयर शुड आई कीप इट? 1200 में रखना। सिस्टम ट्रेलिंग 1000 में रख लेना। सर कौन से ट्रेड में हो? गोल्ड लॉन्ग 3018.500 से हो। उसके बाद बीटीसी लॉन्ग में हो। बैंक निफ्टी लॉन्ग 12 से है।
एक बार निफ्टी का चार्ट दिखाओ। इंट्राडे में रुक जाओ अभी। इंट्राडे वाले रुक जाओ थोड़ा देर। जो जो फ्रेश एंट्रीज के लिए देख रहे हो लोग। सर इतना शांत क्यों? ये जो कैंडल बढ़ा है ना, प्रीमियम नहीं बढ़ी है।
क्या बात कर रहे हो सर? 60 पॉइंट्स बढ़ी है। भाई छोटा मोटा मत बात कर यार प्लीज। हर्षित प्लीज डोंट टॉक फॉर 2 मिनट्स प्लीज। Guys, whatever doubts you guys are having, please do ask. 45 minutes more, the streaming will be there. 50x क्लोजर चाहिए यार, मजा आ जाए। बट ये एक ऐसे बढ़ रहा है पता है, डीप इन द मनी में 45 पॉइंट 60 पॉइंट्स वैसे बढ़ रहे हैं 150 पॉइंट्स में। नितेश तू जो बोल रहा है वो होने वाला है क्या सच में? यस मैम, होगा मैम। मजाक में थोड़ी बोलूंगा मैं लाइव स्ट्रीम पे। आप भी ना। देखते रहना, सिर्फ मजे लेना उतना ही। क्या कर रहे हो स्मिता मैम? पहले स्विंग तो क्लोज होने दो, उसके बाद जो मैं बोला वो करो। अलग ही चल रहे हो आप।
गोल्ड 150% हिट हुआ है, ट्रेल करके चलो।
Sir, what is happening in gold? गोल्ड में क्या हुआ है? बताओ। Which previous retracement to be considered, sir? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्तिक, आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे उसका रीजन बताओ मेरे को पहले। सर, यू आर प्लानिंग टू ब्रेक द हिस्ट्री ऑफ मार्केट, रेडी इज इट टुडे? मैं जब अनुपम को ही बोला था कि एग्जीक्यूशन थोड़ा बहुत जल्दी हुआ है, उसने सीटीसी में ट्रेलिंग रखा। देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, करेक्ट? In the retracement, I thought it was forming S2 B2 setup. यहाँ पे मेरे को बताओ, S2 B2 सेटअप कहाँ पे बनी है सर? S2 B2 setup is in the third candle execution, right? First candle, second candle, third candle on the break, rejection and the break. Guys, trade what you guys see, not what you guys think. And Karthik, आप मैं क्या बोला हूँ ये पहले कीजिए आप डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूशन में जा रहे हो। 2 years ऑफ बैक टेस्टिंग किया आपने? नहीं। 1.5 years ऑफ फॉरवर्ड रिले बार टेस्टिंग किया? नहीं। 1 month ऑफ लाइव एनालिसिस किया? नहीं। राइट, आप डायरेक्टली आके यहाँ पे एग्जीक्यूशन देख रहे हो, हाउ विल दैट वर्क?
क्लियर कट आप एग्जीक्यूशन करने से पहले ही यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन आपको डाल के रखा था मैंने। अगर वो भी नहीं समझ पा रहे हो तो देन व्हाट विल आई डू? Stream will be there for next 25 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. Please guys, before executing the trades with our setups, there is a process. 2 years of back testing, 1.5 years of forward testing in the relay bars, then the small trade executions for building the confidence. Then the next plan of action is taken under the considerations, not prior to that. Bharat, Ram Ram, welcome to the stream. First trade CTC, sir, and second trade I have taken at the level stated by you, sir. Great, Anupam. Guys, this is not a place to execute the trades without learning here. अभी बता दे रहा हूँ कार्तिक. Trade what you see, not what you think, please. भरत, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर्स. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, 1 आवर एंड 15 मिनट्स. एड ऑन एट 3029. प्लीज हिंदी में बता. प्लीज हिंदी में बात करना समझ आता है. थैंक यू सर. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर्स में देखना, मैथमेटिकल स्विंग हाई लो एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट. अगर इंट्राडे ट्रेडर हो देन 1 आवर एंड 15 मिनट्स में देखना. ठीक है.
150 in the first trade running, add on running with 40 pips. मार्केट को देके रहेगा, फर्स्ट ट्रेड का भी देगा तो ये सेकंड ट्रेड का भी देके रहेगा आज। यूरो यूएसडी का प्लान ऑफ एक्शन समझ लेना पहला भरत। राइट, एट द करेंट टाइम फ्रेम डेली में क्या बता रहा है मार्केट? मार्केट इज बुलिश एंड आज के दिन में बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है। राइट, सो आर वेव इन द करेंट स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। सो व्हाट आर द, क्या करोगे यहाँ पे आप? जो आपका प्रीवियस सप्लाई है, प्रीवियस सप्लाई को मार्कआउट में लेना। राइट, उसको रिट्रेसमेंट के साथ, रिट्रेसमेंट कितना, जो हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट है उतना ही रिट्रेसमेंट में आपको रिजेक्शन दिखने को मिली है यहाँ पे। करेक्ट, तो उसके साथ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वी विल बी फॉलोइंग? क्या स्टेप फॉलो करोगे? जितना आपका प्रीवियस सप्लाई है उस सप्लाई को अलोकेट करना। मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके कंटिन्यूटी में गई है तो डबल करके अलोकेशन करना। 150% में रिजेक्शन दिखेगा तो एग्जिट, 200% में रिजेक्शन देखेगा तो भी एग्जिट। एट दिस करंट सिनेरियो मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेके 200% से कंटिन्यूटी के साथ ऊपर के लिए गई है। राइट, सो हाउ विल दिस प्लान ऑफ एक्शन कैसे वर्क करेगा यहाँ पे एट द करंट स्टेज? जो आपका इंड्यूसमेंट रेंज का मूवमेंट होगा पोस्ट रिट्रेसमेंट उतना ही मूवमेंट आपको दिखने को मिलेगी। राइट, ये हमारा इंड्यूसमेंट रेंज है, उसको अलोकेट करो पोस्ट द रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शंस। राइट, सो उसके साथ मार्केट ने रिजेक्शन लिया था फ्रॉम द 12th of March। राइट, सो उस पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ ये रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन आपको कितना दिखने को मिलेगी सिनेरियो वन में? जितना आपका प्रीवियस पॉइंट ऑफ अलोकेशन है उसको अलोकेट करो। यहाँ पे ब्रेक होके कंटिन्यूटी में गई है, डबल कर लेना। द पॉइंट ऑफ एक्शन अगेन रिजेक्शन फ्रॉम 200%। राइट, सो वो रिजेक्शन लेने के बाद व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल बी लुकिंग? क्या स्टेप्स देखोगे? जितना आपका प्रीवियस एंटायर मूवमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन है उसे अलोकेट करके देखो फॉर द सेकंड कंफर्मेशन, डिड द मार्केट टेंड टू ब्रेक और नॉट। राइट, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करके सस्टेन हुआ है, 150% रिजेक्शन अलोकेशन देख लेना। राइट, 150% में रिजेक्शन अलोकेशन देखने के बाद 4 आवर्स में आई है। 4 आवर्स में आपको क्या दिख रहा है? मार्केट यहाँ पे पॉइंट रेंज अलोकेशन के साथ चल रही है, मतलब हर एक डिमांड के साथ रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यूटी मार्क करके चलना। वही पॉइंट ऑफ एक्शंस, हर एक रिजेक्शंस में आपको रिजेक्शन दिखते हुए मिलेगी। राइट, पोस्ट दिस आपको क्या दिखा है यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन में? रिजेक्शंस कितना लेके गया है? जितना भी प्रीवियस मूवमेंट ऑफ एक्शंस है उतना ही आपको रिजेक्शंस दिखने को मिलेगी। राइट, जैसे जैसे आपको रिजेक्शंस दिखने को मिल रही है व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल बी फॉलोइंग ओवर हियर? द नेक्स्ट स्टेप्स आप लोग फॉलो करोगे ऑन द सर्कुलेशंस ऑफ द इंड्यूसमेंट रेंज। राइट, इंड्यूसमेंट रेंज का सर्कुलेशंस आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? जितना मूवमेंट पॉइंट ऑफ एक्शन बिल्ड होता है उतने का ही मूवमेंट कंटिन्यूटी में स्ट्रैटेजिकल अलोकेशंस बिल्ड करेगा, उसके साथ कंटिन्यूटी में प्लान ऑफ एक्शन बिल्ड करेगी। ब्रेक होके सस्टेन हुआ है, with this plan of action you will tend to multiply the version 200% rejection। right, 200% rejection होने के बाद come down to 1 hour। 1 hour में मार्केट यूरो यूएसडी ने क्या किया है यहाँ पे एक रेंज ऑफ क्रिएशन ऑफ इंड्यूसमेंट बिल्ड की है एट दिस पॉइंट ऑफ एक्शन। वो बॉक्स को मार्क कर लेना। पोस्ट मार्किंग आउट दैट बॉक्स व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल बी लुकिंग हियर? ईच एंड एवरी डिमांड अलोकेशन ऑफ 1 hour विद द प्रेशर सेलिंग। सेलिंग किस तरफ का दिख रहा है आपको यहाँ पे? सेलिंग आपको दिख रही है विक क्रिएशन इज टुवर्ड्स द शॉर्ट। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बिल्ड होता है तब तक प्लान ऑफ एक्शन रिमेन्स द सेम विद द कंटिन्यूटी मार्केट अलोकेशन के साथ चलेगी। राइट, कितना मूवमेंट आपको अलोकेट करना है यहाँ पे हर एक पॉइंट ऑफ एक्शन में? जितना आपका प्रीवियस पॉइंट ऑफ एक्शन है उतना ही आपको रिजेक्शन में दिखेगी, उसके साथ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में यहाँ पे ब्रेक हुआ था, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? 150% रिजेक्शन। तो 150% रिजेक्शन पे मार्कआउट कर लो। जैसे ही मार्कआउट करोगे व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल बी फॉलोइंग यहाँ पे?
आप जो भी प्रीवियस डिमांड अलोकेशन के साथ बैठे हो उस अलोकेशन को मार्कआउट करना। इन द सिनेरियो ये मेरा प्रीवियस अलोकेशन है, इसे मैं यहाँ पे करंट मोमेंट ऑफ एक्शन में लूंगा। मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक के साथ 150% 200 अलोकेशन के साथ मार्केट फिर से कंटिन्यूटी की। राइट, यहाँ पे मूवमेंट क्यों आई है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन जितना रेंज ऑफ सप्लाई क्रिएशन है उसे मार्क करना, मार्क करके जितना भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसे अलोकेट करना। उसके साथ आपको दिखेगा रिजेक्शन फिर से, उस रिजेक्शन के साथ एनालाइजिंग विल डू इट इन 15 मिनट्स। राइट, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होने के बाद व्हाट डिड मार्केट ट्राई टू डू एट दिस पॉइंट? राइट, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मार्केट फॉलोड ए रूल। राइट, दिस इज माय फर्स्ट सप्लाई होने के बाद रिजेक्शन कितना लिया मार्केट ने? जो बेरिश मूवमेंट में लास्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट है वो आपका करंट रिट्रेसमेंट पॉइंट एक्ट करेगा। राइट, पोस्ट एक्टिंग दैट पॉइंट ऑफ एक्शंस क्या मार्कआउट करोगे? जितना आपका प्रीवियस सप्लाई रेंज है। राइट, इन दिस सिनेरियो ये आपका प्रीवियस रिट्रेसमेंट पॉइंट है, इस रिट्रेसमेंट पॉइंट के साथ कंटिन्यूटी में अलोकेशन करना पोस्ट द रेड कैंडल। राइट, मार्केट ब्रेक करके सस्टेन की थी, मल्टीप्लाई द वर्जन एंड अलोकेशन। राइट, सो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन में हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। विद दिस रिजेक्शन, सॉरी गलत मार्क किया भरत, एक सेकंड। राइट, इसके साथ रिजेक्शन हमको दिखने को मिली है यहाँ पे। पोस्ट रिजेक्शन व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू विल बी लुकिंग फॉर? रिट्रेसमेंट कितना जनरेट हुआ है? जितना हमारा प्रीवियस रेड कैंडल यहाँ पे है उतने का ही रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे दिखने को मिला है, उसके साथ कंटिन्यूटी। राइट, पोस्ट दैट कंटिन्यूटी में कितना मार्कआउट लोगे? जितना हमारा करंट सप्लाई बिल्ड आउट है यहाँ पे, जितना हमारा करंट सप्लाई बिल्ड आउट है यहाँ पे उसका ही मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन आपको यहाँ पे करंट एक्शंस में दिखने को मिलेगा। राइट, पोस्ट दैट मार्केट रिजेक्शन लिया है, मार्केट रिजेक्शन लेने के बाद एट द करेंट स्टेज इसमें रिवर्सल पॉइंट ऑफ एक्शन दिखाया है। सो जितना डिमांड हमारा पॉइंट ऑफ अलोकेशन में होगा उसका रिट्रेसमेंट कितना होगा? जो लास्ट बेरिश कैंडल का अलोकेशन में होगी वो आप यहाँ पे मार्कआउट करोगे। मल्टीप्लाइड वर्जन पे कंटिन्यूटी दिखेगी, कंटिन्यूटी दिखने के बाद लॉन्ग की तरफ क्यों जा रहा है मार्केट? ऑन द रिजेक्शन ऑफ 200%। राइट, जब 200% का अलोकेशन पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर्स में चल रहा है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू विल बी फॉलोइंग ओवर हियर? आप S2B1 सेटअप के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। टारगेट्स कितना होगा? ये स्विंग लो ये होगी, आपका स्विंग हाई ये होगा, आपका रिट्रेसमेंट पॉइंट ये होगी। ठीक है, ये सेटअप को फॉलो करके बने रहना भरत, आपका टारगेट हिट होने तक फॉलो थ्रू में चलेगा मार्केट। राइट, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शंस में व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स आप देख के चलोगे। जितना मूवमेंट एक्शन प्लान में बिल्ड हुआ है उतना ही यहाँ पे सरप्लस में आपको प्रोडक्टिविटी ऑफ द मूवमेंट दिखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज फॉर यूरो यूएसडी। Gold 15 minutes, we took the last demand as the retracement and it retraced till 200%. And if it closes below 200%, then we will consider the POI range for the retracement and look for 150 200%. No, the next point of action will be taken under the consideration of the previous. Okay, तो previous कौन सा है नीलेश यहाँ पे? ये क्लोजर होने के बाद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन विल एक्ट एज दिस वन, द एंटायर मूवमेंट ऑफ दिस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट विल कंसिडर यस्टरडेज लास्ट डिमांड। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पीओआई रेंज तभी एक्शन में आएगा जब मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन चेंज में दिखने को मिलेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। नो वरीज भरत, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस।
यूरो यूएसडी वो स्मूथ। एमटीएसएल फॉलो करो, मक्खन मारना बंद करो। हेलो सर, निफ्टी 50 में सेटअप का साथ एंट्री कहाँ करे वो बताइए ना सर प्लीज। मैं लास्ट वीक से वीडियो देख रहा, एंट्री समझ में नहीं आया। अमित, आपको सिर्फ एक ही गुजारिश है, प्लीज एंट्रीज भूल जाओ करंट मूवमेंट के लिए। सीखो यार, प्लीज सीख लो। राइट, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। राइट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर वो नहीं सीख पाओगे तो मैं ट्रेड देके भी आपको कुछ फायदा नहीं है। राइट, एंट्री एग्जिट्स कैसे करना है, सिंपल है। राइट, तीन सेटअप में काम होता है मार्केट। सॉरी, दो ही बताया हो ना। सॉरी, दो सेटअप में काम होता है मार्केट। राइट, सो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, करंट प्लान ऑफ एक्शंस में कैसे देखोगे उसे बता देता हूँ। ओके, तो ये रेंज इंड्यूसमेंट होता है, यहाँ पे पार्टनर में आपको मूवमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, सो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, तीन पार्टनर्स होना चाहिए। इसे हम कहते हैं S1 सेटअप। ठीक है, तीन पार्टनर होने के बाद ब्रेक करेगा, ब्रेक करके रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके कंटिन्यूटी। ओके, उसके बाद फिर से तीन पार्टनर बिल्ड होने के बाद ब्रेक करेगा, रिजेक्शन लेके सेकंड कैंडल में कंटिन्यूटी में जाएगी। थर्ड वन, यहाँ पे पार्टनर क्रिएशन दिखेगी, पार्टनर क्रिएशन दिखने के बाद इंड्यूसमेंट में फेक ब्रेक देगा। जो ब्रेक दिया है ना उसी के अंदर एक कैंडल क्लोज होगी, समझ लेना मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। राइट, सो दिस इज इंड्यूसमेंट S1, B1, B2, B3। ओके, सो ये आके हमारा बुलिश मूवमेंट हो गया। सेम वे बेरिश मूवमेंट। राइट, तीन पार्टनर, ब्रेक, रिट्रेस, कंटिन्यू। राइट, तीन पार्टनर, ब्रेक, सेम कैंडल, सेकेंड कैंडल रिजेक्शन, कंटिन्यू। राइट, थर्ड इंड्यूसमेंट, तीन पार्टनर, फेक ब्रेक, कैंडल इसी के अंदर क्लोज होगा, उसके साथ कंटिन्यूटी नीचे के लिए आएगी। ओके, समझ लेना मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके नीचे आएगा। सो दिस इज बेरिश B1, B2, B3। okay, so this is the setup. Next आके how does S2 works? This is S2, right? S2 में two scenarios. फर्स्ट कैंडल विक क्रिएट होना चाहिए, सेकेंड कैंडल क्लोजर चाहिए, थर्ड कैंडल रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी। राइट, सेम सिनेरियो यहाँ पे फिर से सेकेंड सेटअप में कैंडल क्लोज होगा, इनसाइड कैंडल क्रिएट होगी, उसके बाद दो से तीन कैंडल उसी रेंज में खेलना चाहिए, उसके बाद ब्रेक के साथ एग्जीक्यूशन। ओके, दिस इज कॉल्ड B1, दिस इज कॉल्ड B2। ओके, बेरिश मूवमेंट में कैसे नीचे से विक क्रिएट होते हुए दिखेगी, सेकेंड कैंडल क्लोजर, थर्ड कैंडल रिजेक्शन के साथ कंटिन्यू। राइट, सॉरी बेरिश था ना। राइट, ऊपर से विक क्रिएट होते हुए दिखेगी, कंटिन्यूटी में क्लोजर, थर्ड कैंडल रिजेक्शन लेके जहां पे कंटिन्यू होगा उस पॉइंट ऑफ एक्शन में एग्जीक्यूशन होगा। राइट,
सेम सिनेरियो, मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्ड आउट है, स्ट्रक्चर बिल्ड आउट होने के बाद एक इनसाइड कैंडल के साथ टू टू थ्री कैंडल्स कंफर्मेशन ब्रेक, राइट? सो दिस इज फॉर बेरिश मूवमेंट B1 B2, सॉरी दोनों बेरिश ही बता दिया, बुलिश बताते, ओके? सो नीचे से विक क्रिएट होगा, ओके? सेकेंड कैंडल क्लोजर होगी, थर्ड कैंडल रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी, ओके? देन सेकेंड सेटअप, मार्केट एक कैंडल क्लोजर देगी, उसके अंदर एक इनसाइडर कैंडल क्रिएट करेगा, 2 से 3 कैंडल का कंफर्मेशन, थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल में ब्रेक एग्जीक्यूशन, ठीक है? सेम वन, राइट? फिर से रिजेक्शन लेगा, जैसे ही रिजेक्शन लेगा कैंडल कंटिन्यूटी में दिखेगी, थर्ड कैंडल रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी, या कैंडल क्लोजर, इनसाइड कैंडल, 1 2 3, 2 कैंडल कंफर्मेशन या 3 कैंडल कंफर्मेशन, उसके साथ ब्रेक कंटिन्यूटी, ओके? सो यही सेटअप फॉलो करना और कुछ नहीं। अगर डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन को जा रहे हो प्लीज मत करो, सीखो पहला, ठीक है? Before closing, please explain how to look at Nifty. Definitely, Nilesh, I will explain it before closing. Amit, hope you got the point. राइट? सेटअप भी दिखा देता हूँ एक बार। मार्केट ने क्या किया? क्लोजर, इनसाइड कैंडल, 1 2 एग्जीक्यूशन, ओके? विक के साथ कैसे एग्जीक्यूट करते हो? विक, सेकेंड कैंडल क्लोजर, थर्ड कैंडल एग्जीक्यूशन, ओके? इंड्यूसमेंट रेंज में ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है? 3 पार्टनर बनने दो, राइट? मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ यार? कल का ही एक्सप्लेनेशन ले लो, राइट? पार्टनर 1, पार्टनर 2, यहाँ पे सेटअप अलग ही बना है, S2B1 सेटअप क्रिएट हुई है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसमेंट इन इंडियन मार्केट्स। पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, ब्रेक, रिट्रेस, कंटिन्यूटी, राइट? सो रिट्रेस थोड़ा बहुत लंबा ही ले लिया है, वो अलग सिनेरियो है, राइट? बट वो लेगा, रूल फॉलो करेगा हमेशा, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखने को मिलेगा विद द पॉइंट ऑफ एक्शंस ऑफ S2 सेटअप इंडियन सेशंस में। S1 सेटअप जब जब दिखता है वो फॉलो कर लेना, राइट? पार्टनर 1, पार्टनर 1, सॉरी, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, ब्रेक, रिजेक्शन, कंटिन्यू, ओके? ओके सर, ये 15 मिनट में देखना है सर, मैं तो वीडियो देख रहा, सिर्फ चेक कर रहा हूँ, ट्रेड नहीं लिया। ओके, देन इट्स गुड, राइट? बैक टेस्टिंग करो यार प्लीज, डू द बैक टेस्टिंग। योगेश, आधा घंटे में आपका
दो सेंटिमेंट निकल के आई है, राइट। पहला मैसेज आपका था बैंक निफ्टी मूविंग अप नाउ, ओके। आफ्टर 30 minutes निफ्टी बैंक निफ्टी मूवमेंट halted, right? Control your mind. Let the market give you the indication before the movement, उसके बाद trade off execution, okay? At the current scenario market क्या कर रहा है यहाँ पे? मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं है, let the liquidity come. लिक्विडिटी आएगा कहाँ पे? जितने भी लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं ना, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं प्रीमियम डीके के लिए, राइट। सो यहाँ पे नेकेड पोजीशन ऑफ सेलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे हेजिंग हो रही है, राइट। इस पॉइंट ऑफ एक्शन से सी शॉर्ट हुआ है, इस पॉइंट ऑफ सॉरी इस पॉइंट ऑफ एक्शन से पी शॉर्ट हुआ है, इस पॉइंट ऑफ एक्शन से सी शॉर्ट हुआ है, राइट। सो डीके एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं थ्रू द हेजिंग। सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू गाइस विल बी लुकिंग ओवर हियर नीलेश? वन ब्रेक, किसी भी तरफ का ब्रेक आएगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ब्रेक आना चाहिए, राइट। उसके बाद प्रेशर आइडेंटिफाई करना है, राइट। कैसे? कल के दिन में क्या किया था निफ्टी में? एंटायर मूवमेंट स्ट्रक्चर चेंज होने से पहले इंडिकेशन दी थी, करेक्ट। सेम इंडिकेशन आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखना होगा, राइट। सो यहाँ पे वो इंडिकेशन आपको दिखाएगा, उस इंडिकेशन के साथ ही नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन आप देखोगे, ठीक है। एम आई क्लियर नीलेश? सेम विद बैंक निफ्टी में भी दोनों तरफ का पोजीशंस हेज हो रहे हैं एट द करंट स्टेज फॉर सेलिंग। डेफिनेटली आफ्टरनून में एक मूवमेंट आएगा आप लोगों को, वो मूवमेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है? थ्रू द प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द ब्रेक। सेलिंग प्रेशर जनरेट होते हुए दिखेगी या बाइंग प्रेशर जनरेट होते हुए दिखेगा, उस प्लान ऑफ एक्शन के साथ ही नेक्स्ट स्टेप हम देख के चलेंगे, ठीक है। प्रेशर जनरेट होगा, बाइंग साइड की तरफ हो तो बाइंग साइड, सेलिंग साइड की तरफ हो तो सेलिंग साइड। विक जनरेशन होने के बाद कंटिन्यूटी में मार्केट दिखी है, समझ लेना मार्केट वहां से रिवर्स होगा, ठीक है। ओके सर, आई हैव नॉट टेकन ट्रेड, जस्ट वॉचिंग नाउ। गुड डे। यस, प्लीज डोंट योगेश। Complete the learning stage. Post learning stage, execute the trades. I don't have problems. Not prior to that. Everyone keep in mind, fearless trading following the risk management. Emotionless trading, जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Carry the poker face in the directions of the math and hold the trade patientfully. Impatientful trades execute मत करो। उसके साथ फोमो ट्रेडिंग एंड रनिंग कैंडल एग्जीक्यूशंस बंद करो। बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, लाइव टेस्ट करो। उसके बाद स्मॉल अकाउंट के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। उसके बाद जो भी आपका ट्रेडिंग वैल्यू है उसे लेके आके रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो। प्रोटेक्ट योर कैपिटल, डोंट ब्लो योर कैपिटल। मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए नितेश साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।